नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। जैसे कि क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनबेस ने पिछले हफ्ते लेयर 2 प्लेटफॉर्म बेस लॉन्च किया, अमेरिकन मल्टीनेशनल कोका कोला ने प्लेटफॉर्म पर अपने नए NFT कलेक्शन की घोषणा की। कोका कोला के मास्टरपीस NFT कलेक्शन में डिजिटल स्पेस और ऑन चेन आर्ट में इमर्जिंग टैलेंट्स द्वारा कुछ आइकॉनिक आर्टवर्क शामिल हैं। एडवर्ड मंच द्वारा द स्क्रीम और जोनस वर्मीर द्वारा गर्ल विद द पर्ल इयररिंग जैसे टाइमलेस आर्टिस्टिक ट्रेजर्स, एकेट और विक्रम कुशवाहा जैसे स्किल्ड आर्टिस्ट के मॉडर्न पीसेस के साथ सहजता से स्पेस शेयर करते हैं। इन कार्यों ने अब एक नया डायमेंशन प्राप्त कर लिया है क्योंकि वे ब्लॉकचेन पर कलेक्टिबल्स में बदल गए हैं, जो ऑन चेन समर इवेंट में शामिल आर्ट एंथुसियास्ट के लिए ओपन है। मास्टरपीस का उपयोग करते हुए कोका कोला एक क्यूरेटर की तरह काम करता है, जो दुनिया भर से कहानियों को एक साथ लाता है और विभिन्न प्रकार की आर्ट का जश्न मनाता है। कोका कोला का मास्टरपीस सिर्फ आर्ट के कलेक्शन से कहीं अधिक है। ये दर्शाता है कि कैसे आर्ट, टेक्नोलॉजी और लोग ऑन चेन पर एक साथ आते हैं। डिजिटल दुनिया में लाकर कोका कोला अन्य कंपनियों को दिखा रहा है कि डिजिटल एरा से कैसे जुड़ा जाए। ये कलेक्शन रेगुलर आर्ट गैलरी से आगे बढ़कर दुनिया भर के लोगों तक पहुंचती है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जैसा कि NFT मार्केटप्लेस में तेजी से विकास हो रहा है, क्रिप्टो स्लैम के हालिया डेटा ने सोलाना को सेल्स में कार्डानो को पछाड़ते हुए सबसे आगे रखा है। सिर्फ 24 घंटों की अवधि में सोलाना ने $1,134,068 की NFT सेल्स वॉल्यूम का दावा किया, जिसमें 3,507 बायर्स शामिल हुए। तुलनात्मक रूप से कार्डानो $155,244 के वॉल्यूम और 1,016 बायर्स के साथ पीछे है। हालांकि ये फिगर्स एक स्पष्ट तस्वीर पेश करते हैं, लेकिन ये उनकी सत्यता के बारे में सवाल भी खड़े करता है। क्रिप्टो क्षेत्र की प्रमुख हस्तियों ने इस पर ध्यान दिया है। डिजिटल फोर्ट्रेस के प्रमुख स्टेक पूल ऑपरेटर रिक मैकक्रैकन ने डेटा डिस्क्रिपेंसी को संबोधित किया है, जिससे सोलाना के आंकड़ों पर संदेह की छाया पड़ रही है। उन्होंने बताया कि सोलाना की अफोर्डेबल ट्रांजैक्शन फीस आसानी से सेल्स डेटा में हेरफेर की अनुमति दे सकती है। मैकक्रैकन ने टिप्पणी की, सोलाना ट्रांजैक्शंस चीप हैं, इसीलिए वॉल्यूम आसानी से नकली हो सकती है। ये सुझाव देते हुए कि बढ़ी हुई एक्टिविटी प्लेटफॉर्म के NFTs में जेन्युइन इंटरेस्ट को रिफ्लेक्ट नहीं कर सकती है। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। न्यूयॉर्क में मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट ने अपने यंग ऑडियंस के लिए एक वर्चुअल एक्सपीरियंस प्रदान करने के लिए पॉपुलर गेमिंग प्लेटफॉर्म रोब्लॉक्स के साथ पार्टनरशिप की है। इस कोलैबोरेशन के हिस्से के रूप में रोब्लॉक्स यूजर्स अब अपने अवतारों के लिए फेमस आर्टवर्क्स और आर्टिफैक्ट्स के डिजिटल वर्जन्स प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें वैन गॉग भी आइकॉनिक स्ट्रॉ हैट भी शामिल है। ये डिजिटल वेरिएबल्स आर्मर के सूट्स और इजिप्शियन मास्क जैसी अन्य वस्तुओं के साथ रेप्लिका नामक ऑगमेंटेड रियलिटी क्वेस्ट बेस्ड ऐप के माध्यम से अवेलेबल है। वेराइजन के साथ पार्टनरशिप में विकसित रेप्लिका विजिटर्स को द मेट के एक इंटरैक्टिव टूर पर ले जाती है और उन्हें पूरे म्यूजियम में फैली 37 सिलेक्टेड फिजिकल आर्टवर्क के बारे में मार्गदर्शन करती है। ऐप के माध्यम से यूजर्स आर्टवर्क्स को स्कैन कर सकते हैं, जो डिजिटल वेरिएबल्स को अनलॉक करता है, जिन्हें उनके रोब्लॉक्स इन्वेंटरीज में इंपोर्ट किया जा सकता है। ऐप के क्वेस्ट बेस्ड फॉर्मेट के अलावा कोलैबोरेशन में रोब्लॉक्स प्लेटफॉर्म के भीतर द मेट का वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन भी शामिल है। यूजर्स म्यूजियम के 5th एवेन्यू, फिकेड और ग्रेट हॉल जैसे इंटीरियर स्पेसेस के वर्चुअल वर्जन्स का पता भी लगा सकते हैं। उनके पास एक्वायर्ड डिजिटल वेरिएबल्स को जोड़कर और हिस्टोरिकल बैकड्रॉप्स के खिलाफ अपने अवतार्स की तस्वीरें लेकर एग्जीबिशन को क्यूरेट करने का अवसर है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अपनी अग्रणी इनोवेटिव विजन के लिए प्रसिद्ध ऑन साइबर एक बार फिर मेटावर्स क्षेत्र में अपनी सबसे हालिया रिलीज वर्ल्ड बिल्डर के साथ कदम रख रहा है। नया वर्ल्ड बिल्डर टूल, जिसे उपयुक्त रूप से स्टूडियो कहा जाता है, ये वेब3 एंथुसियास्ट के डिजिटल रियल्म के साथ बातचीत करने और निर्माण करने के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव ला रहा है। ये डेवलपर्स को मेटावर्स टेम्पलेट के साथ साथ एक्सप्लोरेशन ऑप्शन की एक कैप्टिवेटिंग ट्रियो प्रदान करता है, जो उन्हें स्क्रैच से मेटावर्स बनाने में सक्षम बनाता है। ऑन साइबर वर्ल्ड बिल्डर टूल एक ऐसी सुविधा पेश करता है जो क्यूरेटर के लिए कस्टमाइज किट्स तैयार करने के लिए GPL फाइलों को इंपोर्ट करने में सक्षम बनाता है। हालांकि इस डिजिटल क्षेत्र में अधिक स्ट्रक्चर्ड जर्नी चाहने वाले डेवलपर्स को सोशल हैंगआउट्स, आर्टिस्टिक डिस्प्लेज और कम्युनिटी मीटिंग्स की मेजबानी के लिए मेटावर्स टेम्पलेट्स उपयोग लगेगा। बहरहाल
वर्ल्ड बिल्डर की शुरुआत डिजिटल दुनिया बनाने से कहीं आगे तक है। ये मेटावर्स के भविष्य में रुचि जगाएगा। ऑन साइबर के पार्टनर प्रोजेक्ट्स मी बिट्स और फॉरगॉटन रूइंस पॉपुलैरिटी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जैसा कि मेटावर्स डी ऐप यूनिटी और अन्य ऑन साइबर एडवांसेस हैं। जैसे जैसे मेटावर्स का विकास जारी है, ऑन साइबर वर्ल्ड बिल्डर टूल क्रिएटिविटी की अनंत संभावनाओं को रेखांकित करता है। ये रीडिफाइन करता है कि क्रिएटर्स ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैसे कंस्ट्रक्ट, परसीव और इंटरैक्ट कर सकते हैं। ओवर टू यू रोशनी। स्पेनिश सॉकर क्लब एफसी बार्सिलोना ने अपनी वेब3 इनिशिएटिव बारसा विजन के लिए लिब्रो फुटबॉल फाइनेंस एजी और नीपा कैपिटल बीवी से $132 मिलियन वर्थ का यानी 120 मिलियन यूरो की इन्वेस्टमेंट हासिल की है। एफसी बार्सिलोना ने कैपिटल के बदले बारसा विजन की होल्डिंग कंपनी ब्रिजबर्ग इन्वेस्ट में 29.5% स्टेक बेच दी। लिब्रो जर्मनी में पब्लिकली लिस्टेड कंपनी है जो फाइनेंशियल मैटर्स पर सॉकर क्लब्स को कंसल्ट करती है। नीपा कैपिटल नीदरलैंड्स में स्थित एक वेंचर कैपिटल फर्म है। तो आज के लिए बस, अरे सॉरी ये स्पेस गया मुझे। हाँ, ट्रांजैक्शन एफसी बार्सिलोना के शेयर होल्डर्स की मंजूरी के अधीन है और 2023 के Q4 में बंद होने की उम्मीद है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वेब3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3.TV। ऐसी और ज़्यादा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर लॉग ऑन करें या फिर स्कैन करें QR कोड। थैंक यू। Hello and welcome to 3.TV. I am Vishakha Thakur. I have with me a very special guest, Mr. Ritik Nag, Head of Asia Listings at La Token. Welcome, Ritik, and your opening remarks on overall or the current scenario of cryptocurrency market. Well, thank you very much for that introduction, Vishakha. I've been seeing the crypto space over the past 3 years, especially from a standpoint from the exchange business point of view. To be very honest, the business part of launching new projects have not reduced overall, even in the bear markets or the bull markets. It's been fairly stable. What has changed is the amount of money being invested into the space. Fortunately, that's been increasing over the past few months, as we've seen that the price briefly was touching close to $33,000 for Bitcoin, and hopefully very soon it can cross a new all-time high in the coming few months, and bring in some new fresh business to the exchange space. Right. So since January, we have seen an 80% rally in Bitcoin. Yep. So will this positive momentum continue, and are we out of those crypto winters now? Absolutely. If you see historically, the market has been working on the US election cycle. So if you see the last bull run that happened, it happened right after the November election in 2020, and it lasted until November of 2021. So we expect a similar situation very soon with the November election coming next year. And hopefully, if we have Ron DeSantis, the Miami governor, who is going to win from the Republican side, it's going to be a major bull run this time. Maybe even crossing 500,000 if he is going to be the next president. But that's only going to be for the time to tell. Even if Joe Biden wins, I'm hoping him to give a lot of free money to people, and that should definitely bring in a lot of money into this space. Not to worry, not to confuse with the other things as well, which like the ETF in the Bitcoin space, as well as other fresh investors in the institutional space that are investing, which will also lead to this. But the election cycle is a huge force that will push the market cycle in the crypto space because of the dollar being dominant in this space. You just spoke about ETFs. So BlackRock, the world's largest asset manager, has filed for a spot Bitcoin ETF along with some other the asset managers. So what is your take on that? Well, it's a very refreshing take on the crypto space, because it was getting to a point where it was becoming very stale in the space. We're seeing exchanges that were saying, hey, we're making it very easy, we're allowing users to invest. But I think so to some point there are traditional investors who at the end of the day are still worried about it. They really don't want to take the risk of going onto a crypto exchange,
with situation, let's say like FTX, these are like very ultra traditional investors that are really afraid to invest. And products such as this will actually bring a fresh breath of air into the space, allowing them to invest without really coming into the crypto space. You know, they're indirectly investing, and that should hopefully give a rally to the crypto bros out there. So, but in India, there's no clarity regarding crypto regulations. But India has already given its suggestions for the G20, framework of cryptos. So, what do you have to say about that? Well, like a famous person once said, you break the rules first and then you ask for forgiveness later. I think so in the tech space, you can't really expect the government to set the standards for a new technology like this. If you take a look at even aspects like the internet, nobody asked for information from the government or standards from the government. It was the companies that did the revolution first, and then the governments followed. I think so the same thing with this. The Indian government is thinking in a very backwards thought process, and we expect the market to evolutionize themselves and bring new stuff into the space. We don't need the government to do anything. So the market will do the growth itself. Hopefully the government does not hinder it to the extent that we've seen it over the past few months and the years, and we see some good stuff with the G20 summit coming very soon. Sam Altman, the co-founder of OpenAI, has come up with an interesting project called WorldCoin. What are your thoughts on that and the intersection of AI and cryptos? Honestly, AI has always been a part of crypto since the beginning. If you've seen exchanges as well as many trading portals, they already offered you AI trading. You could do a lot of the businesses that actually launch projects. They get market-making bots, which are technically AI bots that have algorithms to be traded upon. You set it up, and then they go racing and start trading themselves. So you really had this already on the back end. People didn't really know about it, but with his launch of ChatGPT and many other products, that's when it really blew up in the public face that hey, AI is a big part of crypto. It's certainly needed for investors to acquire new and upcoming projects, to analyze them much better. Humans can only do X amount of analysis on these projects, and the AI can do it exponentially better. So it's overall a better thing for business as well as investors. Tokenization has been gaining a lot of traction. So what is your take on that and the future perspectives of tokenization? Absolutely. So right now, again, the tokenization space is something that is bit of getting to that stale place wherein you're seeing projects repeatedly doing the same thing again and again. Nothing fresh is coming out. But I think so over the next few years, what we will really see, the real benefit of this space is the cost reduction in launching a token as opposed to a security in the traditional finance space. A token or a coin allowing people to launch their securities. Regular businesses that really have their profits in place, they have a real business, they have cash flow. Allowing them to launch tokens is the next bull run that we're going to see with the tokenization space. It's when they start acquiring these and accepting the tokens, that's when we're going to see a lot of huge boom. Right now it's only guys in their basement saying, hey, let's do a meme coin and let's start it out without really any value. But when the real companies start launching their tokens and coins, that's when we'll see a huge boom market. Maybe we can even see the destruction of the stock market over the next 50 years or 80 years when companies decide to launch a token instead of on the stock market. It's quite effective in terms of financials. Very interesting. We are going to see the next bull run with the help of tokenization. Thank you so much, Mr. Ritik, for being on 3.0 TV and sharing your views and knowledge with our viewers. Absolutely. It's a pleasure. Please tune in more onto Web 3.0 TV. We're having some great stuff here. Thank you very much. So that was Mr. Ritik from La Tokens. And for more such interviews or updates on Web3, log on to our website www.3versetv.io or scan the QR code. With camera person Mr. Srinivas Pengonda, this is me, Vishaka Thakur, signing off.